Assalamualaikum. My name is Sana Khalid, and today the topic of my presentation is MSF organization. It is Medicines Sans Frontiers. So let's take a start with the introduction. Introduction founded. This organization was founded in December 22, 1971 in Paris, France, and the headquarters of this MS organization is in Geneva, Switzerland. The number of employees that are working in this organization are 36,482, and the founders are Bernard Kouchner, Pascal, and there are other people. Introduction. This organization, it is basically an international humanitarian medical non-government organization of French origin, and it is best known for conflict zones and the countries that are affected by endemic diseases, as well as this organization helps in emergency situations like in the people who are affected by armed conflicts, in different kind of epidemic diseases, as well as natural disasters and exclusion from healthcare in nearly 70 countries. MSF's perspective as a humanitarian medical treatment provider, that is affordability and availability of medical and suitability of the medical tools. Introduction. In 2019, the group was active in 70 countries with over 35,000 personnel. Mostly इसमें कौन-कौन थे? They were local doctors, they were nurses, medical professionals, logistical experts, इसके अलावा water and sanitation engineers थे, इसके अलावा different kind of administrators थे इसमें. इसके अलावा ये बात बताई थी कि private donors provide about 90% of the organization's funding, while corporate donations provide the rest, giving MSF an annual budget of approximately 1.63 billion US dollars, 1.63 billion. So MSF की development की बात हो रही है, ठीक है. MSF in 1982, Malhuret and Ronnie Broman, who was the president of this organization, they brought an increased financial independence to MSF by providing fundraising by mail to better collect donations. इसके अलावा इसके बाद different kind of established different countries में MSF के branches बनने लगे, like France, Belgium, Switzerland, Holland, Spain. Ongoing missions. यहाँ पे this map is showing basically the countries here, like US में है, इसके अलावा अफ्रीका साइड बहुत ज़्यादा है, एशिया में, रशिया में, ये सब एरियाज हैं यहाँ पे MSF की organizations different occasions पे काम कर रही है. Ongoing missions. The campaign for access to essential medicines was created in late 1999, providing MSF with a new voice which bring awareness to the lack of effective treatments and vaccines available in different countries. Campaigns ने range की different बीमारियों के लिए उन्होंने vaccinations का बताया. इसके अलावा organization also spoke about the lack of humanitarian support in Kosovo and Chechnya. इसके अलावा उन्होंने फील्ड मिशन सेटअप किए, लोगों की सिचुएशंस को देखा, उनको अपने जिस तरह जो भी इश्यूज है उनको किस तरह टैकल करना है, वो चीजें बताई गई. इसके अलावा जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है इन नॉर्दर्न इंडिया, बेसिकली इन पाकिस्तान, उसमें भी MSF has played a role and they have helped civilians in fighting in Kashmir as well as in Manipur. इसके अलावा ऑनगोइंग मिशंस में रहते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इनका बहुत बड़ा टारगेट होता है. साथ साथ जिस तरह डिफरेंट MSF की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट कर रही है, लाइक TB, HIV, एड्स, मलेरिया. इसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इस चीज को दे रही है. जो बेसिकली एक अर्थ को एक आया था इंडियन ओशन में, उसके लिए भी मेंटली जो लोग उस चीज से इफेक्ट हुए थे उनके लिए भी इन्होंने दे प्लेड अ ग्रेट रोल. एंड MSF went through a long process of self-examination and discussion in 2005 and 6. Many issues were debated, including the treatment of nationals as well as fair employment and self-criticism. बहुत criticism उन पे होती रही, जो national level पे, international level पे जिस जगह पे उनको जरूरत होती थी, उन जगह पे पहुंच के उस organization ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया.
Field mission structure. Before a field mission is established in a country, an MSF team visits the area to determine the nature of humanitarian emergency, the level of safety in the area, and what type of aid is needed. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी मिशन होता है. पहले वो अपनी एक टीम भेजते हैं जो जाकर जिस जगह को विजिट करती है, इमरजेंसी की जगह को, कि वहाँ पे क्या क्या चीजें की जरूरत है, सेफ्टी कितनी है, वहाँ पे एड किस लेवल की प्रोवाइड करें, पूरा एक बजट सेटअप होता है उसमें. ठीक है, मेडिकल एड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट मिशंस, although some missions also include वाटर प्योरिफिकेशन, न्यूट्रिशन. क्योंकि मेडिकल की फील्ड है तो उसमें मेडिकल का बहुत बड़ा रोल है इसके अलावा, लेकिन इसके साथ साथ ये सैनिटेशन को भी और वाटर प्योरिफिकेशन और न्यूट्रिशन के लिए भी काम करती है. Field mission team. A field mission team usually consists of a small number of coordinators to head each component of a field mission and a head of mission. ठीक है, एक mission set करते हैं, head होता है जो सारी चीजों को properly deal करता है. The head of the mission usually has the most experience in humanitarian situations of the members of the team, and it is his or her job to deal with the media, national governments, and other humanitarian organizations. Obviously, जो head है, head of the mission, उसका काम आता है कि वो हर जगह हर बंदे से communicate करेगा, मीडिया लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो काम करके प्रोसेस वो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम चलता है. द हेड ऑफ द मिशन डज नॉट नेसेसरीली हैव मेडिकल बैकग्राउंड. जरूरी नहीं है कि जो मेडिकल का जो हेड है उसका मेडिकल के साथ इतना कोई लिंक हो. मेडिकल वॉलंटियर्स में कौन कौन आता है? इंक्लूड फिजिशियंस, सर्जन्स, नर्सेज, अदर स्पेशलिस्ट होते हैं. ठीक है, ये मेडिकल की फील्ड में. जैसे न्यूट्रिशन की फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास हेड्स होंगे तो बेसिकली लीड करते हैं. Then medical components. अब medical components में vaccinations होती हैं different kind of diseases के, like diphtheria है, measles है, meningitis है, tetanus है, pertussis है, yellow fever है, polio, cholera, इन सब की vaccinations होती हैं. इसके अलावा different ताकि जो sanitation के लिए काम हो रहा है, equipments हैं, drugs हैं, जो भी चीजें होती हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट में इंक्लूड होती हैं, वो सब प्रोवाइड किया. इसके अलावा बहुत से एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि लोगों को नहीं मिल पाती हैं जो ऐसे एरियाज में होते हैं, तो उनके लिए भी MSF की जो ऑर्गेनाइजेशन है प्ले अ ग्रेट रोल. पेशेंट्स को एजुकेट भी किया जाता है कि किस तरह आपने इस चीज को आपने इसके अगेंस्ट आपने फाइट करना है. न्यूट्रिशन की बात हो जाती है. न्यूट्रिशन में भी ऑब्वियसली बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे वॉर हो रही है, ड्राउट है, कुछ गवर्नमेंट के अपने कुछ इश्यूज मिसमैनेजमेंट के चल रहे हैं, तो उस एरिया में भी जहाँ पे सिवियर मैल न्यूट्रिशन होती है वहाँ पे भी MSF दे प्ले अ ग्रेट रोल. इंटेंशनल स्टारवेशन इज ऑल्सो यूज्ड, इट्स ऑल्सो समटाइम यूज्ड एज अ वॉर used as a war weapon. ठीक है, बहुत सी जगह पे जहाँ पे इंटेंशनली लोग खुद ही जंग के दौरान खाना पीना इसका सप्लाई बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे MSF प्रोवाइड करती है फ्रूट को, लोगों के दरमियान अवेयरनेस करती है, गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले करती है. इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से जो पेशेंट्स वेट लॉस करते हैं, बच्चों का होता है मोस्टली के वेट लॉस हो रहा होता है, तो उस पर भी MSF प्ले अ ग्रेट रोल इन मेडिकेशंस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस. Nutrition. ठीक है, MSF uses food designed specifically for the treatment of severe malnutrition. इसके अलावा एक प्रोग्राम है therapeutic feeding program. ठीक है, वो basically डिजाइन ही इसी पर्पस के लिए किया गया था to treat severe malnutrition through gradual introduction of special diet intended to promote weight gain after the individual has been treated for other health problems. ठीक है, जो उनके प्रॉब्लम्स से एक थेरेप्यूटिक फीडिंग सेंटर था जो इस चीज पे काम कर रहा था कि क्या क्या डाइट पेशेंट्स को देनी चाहिए और किस किस चीज से इनको प्रिवेंट करना चाहिए. डिहाइड्रेशन समटाइम्स यूज्ड ड्यू टू डायरिया या कॉलरा की वजह होती है, तो उसमें भी वो रिहाइड्रेशन सेंटर्स करते हैं ताकि पेशेंट्स को रिहाइड्रेट किया जाए ताकि उनकी बॉडी फाइट कर सके अगेंस्ट सच डिजीजेस. Water sanitation. Clean water is essential for hygiene, for consumption, and for feeding programs, as well as for prevention of the waterborne diseases. तो जो sanitation workers हैं, engineers हैं, volunteers हैं, वो great role play करते हैं clean water की supply के लिए. तो उसमें water की जो cleaning होती है वो step by step होती है, like sedimentation है, filtration है, chlorination है. वो depend करता है कि different areas में किस तरह prevent उसको work out किया जाता है. Sanitation is an essential part of field missions. And it may include to educate people. इसके अलावा ये होता है कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो रही है, टेक्निक्स हो रही हैं, सीवेज के ट्रीटमेंट्स प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वाटर डिस्पोजल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एजुकेशन है, पर्सनल हाइजीन इसमें हो रही है. Proper waste water treatment and water sanitation, the best way to prevent the diseases जो waterborne diseases cholera type diseases होती हैं उनके basic तो treatment यही है कि उनसे खुद को prevent किया जाए. ठीक है, water की supply को clean and neat water supply होना चाहिए, garbage की disposal होने चाहिए,
तो ये सब चीजें इसकी जरूरी है. However, the most important subject in sanitation is the education of the local population so that proper waste and water treatment can continue once MSF has left the area. ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है कि MSF तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम कर सकते हैं ना. बेसिकली तो एजुकेशन होती है, लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो उस एरिया को क्लीन एंड नीट खुद रखें ताकि उनके पास प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो और उन डिजीज से दे कैन कम बैक फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीजेस. Statistics. In order to accurately report the conditions of a humanitarian emergency to the rest of the world and to governing bodies, data on the number of factors are collected during each mission. ठीक है जी, अब obviously जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे stats का एक होना एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कितनी एरिया में जा रहे हैं, किस किस तरह के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स कितने हैं, कितना उसमें कॉस्ट आ रही है, सब कुछ उसका एक पूरा स्टैट्स होता है, उसका पूरा डाटा को मेंशन किया जाता है, एक रिकॉर्ड में रखा जाता है. The rate of malnutrition in children is used to determine the malnutrition rate in the population and then to determine the need for feeding centers. Malnutrition कितनी चल रही है, वो feeding centers वो सारा उसको आपस में एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन है, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है. Various types of mortality rates are used to report the seriousness of a humanitarian emergency, and a common method used to measure mortality in a population is to have staff constantly monitoring the number of burials and cemeteries. Obviously, staff एक अपने हर एक जगह पे एक लेवल पे एक होना चाहिए. MSF उसका सेट करती है ताकि मोर्टालिटी रेट को चेक किया जाए, डिजीज कितनी स्प्रेड हो रही है, कितने कंट्रोल में है, ये सब कुछ बहुत जरूरी है. By compiling the data on frequency of diseases in hospitals, MSF can track the occurrence and location of epidemic diseases. इसके अलावा ऑब्वियसली वो एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कहाँ का डिजीज हो रही है, एंडेमिक डिजीज कहाँ का कंट्रोल करना है, कितनी वैक्सीन कितने ड्रग प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए रिकॉर्ड इज अ मस्ट. इसके अलावा जो वॉलंटियर्स काम कर रहे थे डेफिनेटली बहुत से डेंजर्स फेस करते हैं, किडनैप होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी उनके आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं. इसके अलावा इसके अलावा ये बात बताइए कि अरेस्ट हो जाते हैं, एबडक्शंस हो रही हैं, तो बहुत जगह पे पॉलिटिकल जहाँ पे इश्यूज होते हैं वहाँ पे ये होता है कि उनको जो फील्ड मिशंस के जो हेड्स होते हैं उनको मोस्टली एक्सपेल भी किया जाता है फ्रॉम द एंटायर कंट्री. Like MSF has played a great role in overall on the whole world in a lot of countries. So in achievements they have been awarded different kind of prizes. Like 1996 में they were awarded with Indira Gandhi Prize, 1999 में they were awarded the Nobel Prize. इसके अलावा 2015 में they were awarded with Lasker Bloomberg Public Service Message. So that's it. That's the end of the presentation. I hope we have been clear with everything. Thank you so much. Allah Hafiz.